ठीक अच्छे ऑनलाइन के जॉइन भी नहीं माने क्लास रे तो नहीं तो यूट्यूब ओके गुड इवनिंग एवरीवन के नुआ ओके सो आज फर्स्ट क्लास आ पूर्व किसी क्लास होता 4:30 रे नहीं नहीं एमनकर हो नथला ना ओके सो टिके जानिबा तुम मन को विषय देन विल स्टार्ट गायत्री नयगढ़ कोठू कौन ग्रेजुएशन कौन स्ट्रीम कोठी MSc in okay BCA कोठू एबे प्रिपेयर हो जा ओके गुड इवनिंग गुप्ती गुड इवनिंग वर्षा गुड इवनिंग देवकी ओके गुड इवनिंग साईप्रिया ओके सो मु तमरो कोन निए एनीबॉडी हैव यू सीन द यूट्यूब क्लासेस देखिछो ओके आउ करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक भी मुनिए ओके सो माय नेम इज स्तुति महांती एंड मु टेक्निकल बैकग्राउंड रो पूरा बिलोंग करे मोर PhD इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग तो सेति पे मु तमर साइंस एंड टेक पार्ट नउची और करंट अफेयर्स तो नउची एंड you are the third batch मु जोठी पढौची करंट अफेयर्स ओके सो यू कैन ट्रस्ट मी एना मु निजे भी देखिची को टाइप रो ने 3 वर्ष हलानी मु देखुची को टाइप रो क्वेश्चंस हमरो आसुची करंट अफेयर्स रे एंड तम माने भी जदि देखिथिबो जानथिबो क्वेश्चन पेपर ता हमरो कोआड को टिके फोकस रहउची हला आउ सेही जुग नै एंशिएंट हिस्ट्री रो एटा पढुची बट सेटा भी बहुत डीप पढुची आ एमते नै वन लाइनर गुडा को हम एमते एसएससी नॉर्मल एग्जाम पे तमे प्रिपेयर हे कि जाओ सेमती यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ओएस खास करके ए वर्ष रो क्वेश्चन पेपर जदी तमे देखिछो तमे जानिथिबो केते टफ पड़थिला हला माने कोचिंग सेंटर मानको भी आंसर खोजिया को 2 ରୁ 3 दिन लागि गला तो भाबो 2 घंटा भितर जणे केमिति सेठी करथिबो ओके तो करंट अफेयर्स गोटे एमिति टॉपिक जो थरे तमरो कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होबो माने किछिटा क्वेश्चन तमे प्रेडिक्ट करि परिबो जदि तमे रिगरसली 1 ईयर प्रिपेयर करथिबो मु कहूनी कि जदि तमे आज क्लास कर देलो फिर 5 मास पर आउटे क्लास देखिबो फिर यूट्यूब वीडियो टोटली छाड़ देबो नाही जेबे भी क्लास होची सिंसियरली एना मु तुमको ऑलरेडी फिल्टर करके आनुची किछटा जिंस इंपोर्टेंट थिबो बोली तमे ताकू ही जदी इग्नोर करिवो लास्ट बोल को तमरो किछि भी नथिबो कि मु करंट अफेयर्स रे कोन पढिबी तापरे से कोन स्पीडी करंट अफेयर्स खुलिबो सेटा ओड आछे ना तापरे ताकू पानी कर देक जीवो बट सेठो आसीबनी करंट अफेयर्स रो भी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग दरकार खाली वन लाइनर पढ़ी के गले हमरो हबनी ओके तो करंट अफेयर जेतु मु करंट अफेयर्स नउची मु तुमको करंट अफेयर कथा कहूची जो फैकल्टी माने जो सब सब्जेक्ट नेबे से सब्जेक्ट कथा कहबे तो करंट अफेयर्स रे तमरो प्रेडिक्टेबिलिटी टिके बढ़ी जाए माने को क्वेश्चन आसी पारे को क्वेश्चन न आसी पारे सिलेबस रे अछि न्यूज रे अछि दीटा जिंस दीटा जदी ओवरलैप होची देन निहाती आसीबार प्रोबेबिलिटी 90% न आसिले तमर किछ खेती नै बट आसिले तमर प्रॉफिट ना तो पढिले तो किछ खेती हेबनी आउ जे कोनोसी भी एग्जाम पे बिकॉज मु तो सब बोले कहबी यू शुड प्रिपेयर ए ग्रुप माने कोन ग्रुप भी कोनी माने बैकअप ऑप्शन गोटे निहाती थिबा दरकार इट इज अ वेरी अनसर्टेन एग्जामिनेशन समस्त हबो बेले किछि माने नै लक्ष लक्ष पिला दउचंती सेही भितरु 200-300 पाउचंती ता माने नुह जे बाकी गुडा को टैलेंटेड नुहंती हां कि नै समस्त पाठ पढंती किछि जण
नॉन सीरियस थांती है माने एबे जंते तम माने किछि नुआ नुआ तुमको लागिवो टे जोश आसीबो बट एट द एंड ऑफ 4 months 5 months से एनर्जी जोटा 100% थी धीरे धीरे सेटा 70% 60% 50% एमती हे बट से एनर्जी टाको जे कंसिस्टेंटली रखी परला 1 year से डेफिनेटली लिस्ट ना का देखियो ओके तो से कंसिस्टेंसी टा मेंटेन करो क्लासेस गुडा को रेगुलरली अटेंड करो करंट अफेयर्स ऑनलाइन भी होची बट आई वुड माने रिक्वेस्ट यू कि जदि आसी पाउचो क्लास आसी की कले सीरियसनेस टा बढ़िबो बिकॉज़ ऑनलाइन मोबाइल रे के केते सीरियस मु जानछि हैला तो केते मंथ पय प्रिपेयर करबो ओके केते मंथ पय प्रिपेयर करबो किछि जेबेटु तमे प्रिपरेशन स्टार्ट करूछो सेबेटु करिया कथा तमे जदि जेमती से बोले से ऑलरेडी 1 year हेलानी प्रिपरेशन करलोनी तमे राइट तो 1 year हेलानी तमे करंट अफेयर्स सहित टच रे अछो सेटा तो जेबेटु तमे प्रिपरेशन स्टार्ट करूछो तमे सेबेटु करंट अफेयर्स थर होबार अछि एटलीस्ट मिनिमम तमे पाखरे बे टाइम केते अछि वर्ष अछि धर 11 months वर्ष अछि तमे एतिकी तो करो तमे एबुटु प्रिपेयर हो मु जद तुम कहबे नै 2 वर्ष रे पढो तमे कोन एबे जाय कि पूर्ण पढिबो नो यूज आ करंट अफेयर्स रिपीटेड भी हुए किछरा जिंस जदि गोटे जिंस न्यूज रे अछि बारंबार से न्यूज रे आसीबो जदि इंपोर्टेंट हो बारंबार न्यूज रे आसीबो 6 मास तळे भी गोटे जिंस जदि न्यूज रे थिला भी आसीबो तो तमे केनतो कहि परबो कि नै मु कहि परबिनी कि 1.5 वर्ष पुराना आस्थिला सेटा न्यूज रे कंटीन्यूअसली जेतु थिला सेटा आस्थिला राइट तो तमे एबुटु पढो तमे जेबुटु स्टार्ट करूजो सेही दिनठु हमरो करंट अफेयर पढ़िया कथा लास्ट को जदि हमको टाइम मिलिला देन मैराथन सेशंस हुए कि कौन हुए कि से बुकलेट गुडा को मैगजीन्स गुडा को सेथिरे तमे से जिंस गुडा किछटा ओवरलुक कर परियो बट पचारले केबेटु स्टार्ट करबो जेबेटु तमे प्रिपरेशन स्टार्ट करछो करंट अफेयर से दिनटु स्टार्ट करबा दरकार 1 year एटलीस्ट ओके ठीक अछि तो आजिरो क्लास ता में स्टार्ट करबो तापरे बिकॉज नुआ नुआ तमन को टिके हठात ए सब जिंस गुडा को माने जेहेतु फर्स्ट क्लास सेमान करता छडा दे हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन रे क्लासेस पिला माने वर्ष ऊपर हेला अटेंड करूछन तो जेहेतु तम माने नुआ पढछो टिके माने मु तमु कहबी कि मु केमिति पढाए करंट अफेयर्स ओके तो जनरली एमती स्नैपशॉट्स तमे देखिया को पाइबो न्यूज़पेपर बिकॉज तमन तो न्यूज़पेपर पढोनी तो न्यूज़पेपर रो जो गुडा को इंपोर्टेंट माने के रखे एंड सेठू आमे लिंक करू स्टैटिक को करंट अफेयर्स तो पढ़िबा कोन न्यूज अछि कोन पे से न्यूज टा इंपोर्टेंट के सिथरे इन्वॉल्व अछंती ता सहित ताको स्टैटिक सहित भी लिंक करबा राइट एंड बहुत सारा जिंस तमे देखिबो कि पॉलिटी रो माने करंट अफेयर्स टा पॉलिटी रिलेटेड भी टिके बहुत आसे माने मु जेति की फील करछि जेति की न्यूज रे थाय जिंस गुडा को तमे जदि ताको स्टैटिक सहित लिंक करबो तमे गोटे सब्जेक्ट पाइबो पॉलिटी तो समस्तंगर थाए गोटे स्ट्रांग आउ हमरो ओएस रे भी तमे देखिछ पॉलिटी रो वेटेज टिके अधिक अछि तो स्टैटिक तो तमे पढिछ तमे क्लास रे भी पढिबो बट ए जिंस गुडा को फॉर एग्जांपल एबे तीटा एग्जांपल मु देबी कोन दीटा रिसेंट एग्जांपल पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स केते समय लागुची सेटा टिके बहुत कॉमन को जोटा समस्त जानथबे डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज रे थिला तो डिलिमिटेशन कमीशन कोन से कमिटी किए फॉर्म करतेला केबे हेतिला केते थरो डिलिमिटेशन कमीशन हमर बसिची को ईयर रे बसिची दोज आर ऑल स्टैटिक्स दोज आर नॉट करंट अफेयर्स आउट टिके रिसेंट को राघव चड्ढा एरा तो तमे सब न्यूज रे देखिछ रील्स रे देखुछ तो राघव चड्ढा कोन एंटी डिफेक्शन लॉ डिफेक्शन कथाटा उठिला डिफेक्शन डायरेक्टली तमे न्यूज रे पढनत पड़ तमे न्यूज रे पढतबो कि से गोटे पार्टी छाडी के गोटे पार्टी को मिसिले से जिंसटा को हमें कहू कोन डिफेक्शन कहै छै तो डिफेक्शन रिगार्डिंग हमर किछ लॉ अछि कि अछि एंटी डिफेक्शन लॉ को शेड्यूल रे आछि 10th शेड्यूल रे आछि हला केबे एटा को अमेंडमेंट रे हम एटा इंसर्ट करथिलु ना जेबे हमर कॉन्स्टिट्यूशन बना हितला ई जिंसटा थिला ए सब जिंस पढिया को पड़िबो हमको खाली न्यूज टा पढ देले हबनी जदि आमे पढुछु राघव चड्ढा छाडिला हमको क्वेश्चन रे पचारिबो नै के छाडला
को पार्टी को छाड़ला को पार्टी रे मिसेला हमको पचारिबो एंटी डिफेक्शन लॉ रे जो प्रोविजन टा पचारिबो तांगर कोन थिला आगो थिला 1/3 मेंबर जदी चेंज करिवे गोटे पार्टी रु आ गोटे पार्टी देन तांको ऊपर एंटी डिफेक्शन लागिबोनी लागिबोनी हला से जिंस 1/3 टा चेंज हला गोटे अमेंडमेंट रे को अमेंडमेंट 51st अमेंडमेंट रे से 1/3 टा चेंज हो गला 2/3 तो सब जिंस पढ़िया पड़ो तबे ओनली हम कहि परबो कि हम करंट अफेयर भी पढु ता सहित हमर स्टैटिक रो रिवीजन भी होची एंड ए जिंसटा एग्जाम रे पढिबार प्रोबेबिलिटी अछि ओके नाउ एटा इशू देखो एटा हला तमरो गोटे डैम को नेकी आर्टिकल आस्थला काली रो न्यूज़पेपर ना केबे गोटे तो सुनी छ केबे मेक्केदाटू डैम सुनछ केबे कोठी अछि ए तो लिखा है जो तमिलनाडु असेंबली unanimously opposes dam at मेक्केदाटू कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुनते हो तो इट इज समवॉट रिलेटेड टू दैट हैला तुम एठी भी कोठी देखिया को पाएबो जहां भी तुमको एठी देखा जाउची पीडीएफ तुमको मिलेबो पीडीएफ मिलिले ए आर्टिकल जहां भी थाए मु समस्त को पढिबो हैला आर्टिकल गुडा को तुम निजे पढिबो जहां लिखा हुए एडिटोरियल जदी गोटे थाए एडिटोरियल को निजे पढिले ही तुम लोकर व्यू जानि परबो सेटा भी जणा लिखिथिबो ता व्यूटा कोन बिकॉज आमर खाली प्रिलिम स्पेसिफिक कले तुम टोटाली पाइबनी मु लिखिक दे देबी तुम जब कह मु प्रिलिम्स से क्वालिफाई करी थोड़े प्रिलिम्स क्वालिफाई करे तापर मु मेंस पे पढ़ी सेमती हुए नहीं इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन तो तुम भाबिबो कि मु नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू देबी इंटरव्यू रे मते कोन क्वेश्चन पचारिबे इंटरव्यू रे तुमको ये क्वेश्चन पचारिबे मेक्केदाटू डैम रो इश्यू कोन थिला देन यू माने तारो पछड़ बैकवर्ड आसीबो कि मेंस रे जदि पढिला ई क्वेश्चन मु केमती फ्रेम करबी इंट्रोडक्शन कोन रहबो बॉडी कोन रहबो कंक्लूजन कोन रहबो आ जदि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रो मु देखिबी देन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू रो एठो कोन क्वेश्चन आसी पारे दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर कि इंटरव्यू रे जदि क्वेश्चन मते पछरा जाय मु कोन आंसर करबी इशूटा कोन आ तमे कहि दबो जानि नी देन गला ए वर्ष रो मार्क इंटरव्यू मार्क भी तमे देखिथिबो लास्ट ईयर रो केमते कोन आसी ओके आगो पढ़िबा देन विल सी सो 19th जून रे तमिलनाडु असेंबली अनएनिमसली पास्ड ए रेजोल्यूशन पास हेची मूव्ड बाय द चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय एटा भी न्यूज रे हमें देखिथिलु से जो हेले एटा भी चलथिला चर्चा रे तांकर जितिबा प्रोसेस ता ताकू भी हमें स्टैटिक को रिलेट करके पढ़थिलु तांको जो जीता गला तांको जितेबा कथा थिला कि इज इट माने तांको जितेबाटा ठीक ना भूल केते वोट रे से जितेले केते वोट मिलिबा कथा सब जिंस हम स्टैटिक को नेके पढ़िथिलु हैला opposing Karnataka's plan to build the Mekkadatu Dam on the Kaveri River. Now Kaveri River has been in news for many years. Hela and सेठी पे ए न्यूज़ तो important है जाउछ because it is related to Kaveri water dispute. तो you have to read all this. ता सहित तुमको Kaveri water dispute पढ़िया को पड़ेगा ता सहित तुमको interstate water dispute पढ़िया को पड़ेगा. Interstate Council को आर्टिकल रे आसी सेतिर कोन लिंक कर परछ गोटे जत्ते बेले गोटे टॉपिक पढुछ मन रे माइंड मैप हबा कथा कावेरी वाटर डिस्प्यूट इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 262 की 263 सेतिर कोन करा हिची सेतिर को माने मेंबर थिबे से मेंबर माने केते टर्म रहबे कहूची फॉर एग्जांपल एमिति नेटवर्क गोटे फॉर्म हबा कथा देन ओनली माने तमरो अंडरस्टैंडिंग ता बढ़िबो से टॉपिक ओके The House urged the Centre to deny all the clearances to the project and set up a new tribunal. Tribunal what asila? Tribunal is related to कौन? Say article 262, 263. हैला जोटा कि तमे पॉलिटी रे केबे ना केबे पढिबो but will also read. हम निहाती पढिबा से ओके तो नुआ ट्रिब्यूनल गोटे बसा जाऊ जेमिते हमरो महानदी वाटर डिस्प्यूट भी अछि ता पे भी वर्तमान सेरा भी न्यूज रे थिला किछि हफ्ता आगु महानदी वाटर डिस्प्यूट का भीतर अछि छत्तीसगढ़ ओडिशा भीतर
है। तो ये एत पानी ये मैंने छत्तीसगढ़ कौन कर बहुत सारा बैरेजेस बने देछि हमर जोठू पानी आसीबा कथा सेठी से बहुत सारा बैरेजेस बने देछि तो हमको जति पानी आसीबा कथा सेठी आसुनी एंड सेठी पय गोटे नुवा ट्रिब्यूनल बसा जाऊ सेटा भी आस्थिला तो ट्रिब्यूनल बसाइबा पय कांसेप्ट कोठू आस्थिला एटा हमर स्टैटिक सहित रिलेटेड एटा सिना करंट अफेयर नुवा ट्रिब्यूनल बनाया पय से कहले कि सब क्लियरेंस तांकर कैंसिल करा जाओ गोटे नुआ ट्रिब्यूनल तांकर बसा जाओ टू सेटल द डिस्प्यूट इट्स द लेटेस्ट फ्लेयर अप इन वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट रिवर क्वारल्स कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु कावेरी वाटर डिस्प्यूट को स्टेट भीतर अछि सिंपल क्वेश्चन गोटे सिंपल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कर्नाटक तमिलनाडु अपस्ट्रीम रे की अछि डाउनस्ट्रीम रे की अछि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बुझुथबो एठी गोटे जदी रहिला कोन स्टेट दैट इज एन अपस्ट्रीम एठी गोटे स्टेट रहिला दिस इज एन डाउनस्ट्रीम रिवरटा जदी एम्ति फ्लो होची तो अपस्ट्रीम नाम रो रहिची कर्नाटक डाउनस्ट्रीम रे रहिची तमिलनाडु सो जो मेकेडा को आपको गोट्स लीफ बेली भी कहा जाए इट इज अ डीप जॉर्ज इन रामनगर डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज इन कर्नाटक तो एग्जैक्टली जदी हमें से डैम टा देखिबो डैम रो लोकेशन होची तमरो कर्नाटक रे ओके तो इटी तमे देखि परथबो दिस इज द कावेरी रिवर ओके इटी तमरो रहिला आंध्र प्रदेश इटी कर्नाटक इटी तमिलनाडु एंड मु तमरो कोन कहली को स्टेट भीतर अछि कर्नाटक ऑन द अपस्ट्रीम तमिलनाडु ऑन द डाउनस्ट्रीम ओके अपस्ट्रीम कर्नाटक तळे तमिलनाडु कोन पाए बे मैप देखैली again this is also relating I'm trying to relate it to static रे तुमको ये सब जिंस पछरिबो बुझिलो माने मैप ता जदी स्टडी करथिबो कोठी कोन अछि ने कावेरी रिवर ता कोठी फ्लो होछि तुमको कावेरी वाटर डिस्प्यूट विषय न पछरि पारु तुमको कावेरी रिवर रो ट्रिब्यूटरीज पछार दबो किछि भी पछार दबो बिकॉज़ दैट इज इन न्यूज़ बुझिलो ओके सो मेकेडाटू होची तमरो कर्नाटक रे वेयर द कावेरी मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कवती कावेरी तार ट्रिब्यूटरी अर्कवती को मीट करची कोठी ए मेकेडेटू डैम पाखरे सो एटा भी पचार दबो अर्कवती इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर तमे जनरली गंगा ब्रह्मपुत्र रो ट्रिब्यूटरीज उडा बहुत डेप्थ रे पड़ी की जाओ अर्कवती बहुत जन सुन नथिबे एंड से सेटा पचार एमति नो कि से सेटा ही काई पचारला सेटा ही काई पचारला बिकॉज़ न्यूज़ रे थिला सिंपल एथि में कहू हाउ कैन यू एनालाइज प्रोबेबिलिटी केमते पढ़ाई परिबो कि प्रेडिक्ट केमते करि परिबो क्वेश्चन कोन कोन पढ़ी परिबो एंड जदी पढ़ी गला तमरो माने मके पे चक्का हो कि नहीं 2 मार्क मिलु 2 मार्क काई रु केते क्लोज टू द तमिलनाडु बॉर्डर कर्नाटक वांट्स टू बिल्ड ए बैलेंसिंग रिजर्वायर देयर ओके व्हिच इज अ डैम टू स्टोर सरप्लस वाटर एंड रिलीज इट इन ए कंट्रोल्ड वे तो आपको मना के करूची तमिलनाडु पास कला हैला कर्नाटक रो प्लान को अपोज करूची कर्नाटक रो प्लान को अपोज करूची कर्नाटक रो प्लान कोन सेठी गोटे रिजर्वायर बनेबो कोठी मेकेडेटू डैम रे गोटे रिजर्वायर बनेबो जोथरे की बेसिकली से वाटर को स्टोर करबो आ ताको रिलीज करबो कंट्रोल वे रे जदी एटा कला पावर का पाखरे पळेबो कर्नाटक पाखरे इट विल रिलीज इट इन ए कंट्रोल माने केते बळे केते पानी छाडिबो से का ऊपर रहला कर्नाटक ऊपर एबे जो इंडस वाटर डिस्प्यूट हमर हेची कंट्रोल का पाखरे अछि इंडिया पाखरे हला सेठी का पाकिस्तान को जी वार करबा तो दैट इज दीटा कंट्री भीतर डिस्प्यूट गोटे रिवर को नै कि कंट्री भीतर हमर बाउंड्री को नै कि नले रिवर को नै कि डिस्प्यूट हुए सेम स्टेट मध्य भीतर भी सेटा हुए गोटे रिवर को नै कि डिस्प्यूट सब बोले चलथिबो हला नले बाउंड्री को नै कि डिस्प्यूट चलथिबो जेंति बाउंड्री को नै कि डिस्प्यूट हमर ओडिसा रे कोठी अछि कोटिया हला एमति चलिथिबो तो एटा तमरो कर्नाटक एटा बिल्ड करिवार अछि बट ताको अपोज करूछि तमिलनाडु तारि गाडी से गोटे रेजोल्यूशन पास कला दिस इज द इशू ओके आपको हम स्टैटिक्स से तो केमते लिंक करिबा विल रीड अबाउट ट्रिब्यूनल्स विल रीड अबाउट यू नो कौन सेटा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जोटा पॉलिटी रे अछि प्लस जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो हमें मैप टा स्टडी करिबा कोठी एग्जैक्टली डैम टा अछि
कावेरी रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन केमिति से फ्लो करे हैला को स्टेट दे की फ्लो करे एवरीथिंग वी हैव टू रीड इट डेटा. So Mekedatu is a 9,000 crore project proposed at Ontigondlo in Karnataka. It is at the confluence of Kaveri and its tributary Arkavati. Okay, as I said, Arkavati ra tributary सहित से सेठी meetup करछि जोटी तमर project हबार अछि. Reservoir is aimed at ensuring drinking water to Bangalore and adjacent areas. Project also envisioned to generate 400 megawatt of power भी generate करिवो ये प्रोजेक्ट. बट से प्रोजेक्ट को अपोज के करछि तमिलनाडु कोन पे बिकॉज ऑब्वियसली जदि आ पाखरे आसी गला देन पूरा कंट्रोल रहि जिवो का पाखरे कर्नाटक पाखरे. एंड जदि से माने बेसी पानी जतबे छाड़ देबे जदि छाड़ी देबे आसिले सेटा कोन तमिलनाडु को देन सेठी फ्लड हबार चांसेस अछि. जदि से माने पानी कम छाड़िले देन इरिगेशन रे तांगर इफेक्ट पकेबो कि नहीं स्कैरसिटी ऑफ वाटर देखिए को मिलेबो. तो ए कंट्रोलटा न रहू बुझलो जेहेतु रिवरटा दु जनकर स्टेट रे फ्लो करूची एबे जंदे महानदी हमर दु जनकर स्टेट रे फ्लो करूची का जनकर पाखरे पावर न रहबाटा ठीक सिमिलर वेट. ओके सो कॉस्ट आई वी हैव सीन एंड एमती भी क्वेश्चन हमको आजिकली पचारची डैम इश्यू रिलेटेड 3टा 4टा स्टेटमेंट दे देबो सेठी तुमको 9,000 कोटी करोड़ काटी लिखि देबो 6,000 करोड़ से बजेट लिखली बिकज ओपीएससी करूचे एमती रिसेंटली तमरो फाइनेंस कमिशन रिलेटेड गोटे पढ़ी क्वेश्चन 3.5 को 2.5 एमती सब करथिला से हला. तो एटा को 9,000 रु से 9,500 करोड़ कर दबो देन से स्टेटमेंट भूल जाइबो कि 8,000 करोड़ कर दबो से स्टेटमेंट भूल जाइबो. तो माने केमिति क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट आमे ही निजे सेटा करे ओपीएससी तो कबे कहबनी म एमती क्वेश्चन पचारिबी हला. पर्पस वी हैव ऑलरेडी सीन 400 मेगावाट ऑफ पावर एटा भी से चांस चाहिले चेंज करि परिबो 400 मेगावाट ऑफ पावर करबो कि 4,000 मेगावाट ऑफ पावर कर दबो गोटे जीरो लगे दबो देन से स्टेटमेंट भूल जाइबो बुझ परछ. ओके सो कर्नाटका कहूची इट ओनली स्टोर्स सरप्लस माने अधिक हे जिवो सरप्लस माने जेतिके मिनिमम जिबा कथा सब आडे जिवो जहा अधिक पानी हे जिवो ओनली सेटा को ही स्टोर करिवो बोली कर्नाटका रो तांग तरफ रु से माने कहउचंती. कर्नाटका सेज इट विल ओनली कैच वाटर दैट वुड अदरवाइज फ्लो एज ए वेस्ट हला जोटा एमते बहि जिवो तम पे वेस्ट हबो हमें बस सेटा को ही कि जाय कि ना से तमरो सी रे मिसि जिवो सेही पानी टा को ही हमें स्टोर करिवा कथाटा कहउछ. हमें कहनु कि पूरा तमरो सब पानी हम कब्जा रे रखि दउ हला. तमिलनाडु रो फियर कोन आवर फार्मर्स विल सफर फार्म जदि स्कैरसिटी ऑफ वाटर देखा गला फार्मर माने ही अफेक्टेड हेबे. द कावेरी इज अ डेफिशिएंट बेसिन इट्स वाटर इज ऑलरेडी फुल्ली शेड जहा को जति मिलिया कथा मिले छी. ए न्यू अपस्ट्रीम रे जदि तमे डैम बनौछ अगेन लोकेशन ऑफ द डैम बनौछ कोठी अपस्ट्रीम रे से जदि एठी बनै थांता का को एते असुविधा हे न थांता बुझ पल्ला से एठी बनौछ पानी टाइम ते फ्लो होतबो तमे एठी रखि देलो पानी टा एठी रखि देलो देन ऑब्वियसली इफेक्ट का तमे देखा जिवो तमिलनाडु को ही इफेक्ट देखा जिवो कि नै एठी बनैथिले भी चलंता तांको पाखरे आसी सारंता देन तमे बनैथान एमते कोन गोटे बट से एक्जेक्टली तांकर जोठू आसुची सेठू ही बंद करिवार से कहूची हला. तो सेति पे तमिलनाडु रो सेटा हला भय कि जेहेतु इट इज अ डेफिसिट डैम और गोटे नुआ अपस्ट्रीम रे जदि हमें गोटे डैम बनौछु इट थ्रेटन्स द फ्लो टू द मेटर डैम एंड द डेल्टा फार्मर मान को इफेक्ट पकेबो. ओके सो कंसेंट दरकार 2007 ट्रिब्यूनल अवार्ड एंड द 2018 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड दैट इन अ डेफिसिट बेसिन माने कावेरीटा होची तमरो गोटे डेफिसिट माने कम डेफिसिट वर्ड माने हला कम बेसी पानी तमरो सेठी स्टोर हेगी रहि पारेनी. तो जेहेतु इट इज अ डेफिसिट बेसिन नो न्यू प्रोजेक्ट कैन कम अप विथ ऑल बेसिन स्टेट्स एग्री सब स्टेट्स एग्री कला पर ही गोटे नुआ प्रोजेक्ट आसी परिवो. दिस इज एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2018 रे गोटे जजमेंट हेथिला हला. तो मन इच्छा जे कोनोसी भी स्टेट चाहेले गोटे प्रोजेक्ट बने दे परिबनी सब स्टेट जो स्टेट माने इन्वॉल्वड अछंती समस्त एग्री हेले ही सिटी तमे बने परिबो हला. सो द प्रोजेक्ट इज एट डीपीआर एबे पर्यंत ऑब्वियसली किछि बना हेनी
डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट माने पेपर ही अच्छी किसी फिजिकली बना है नहीं अंडर सेंट्रल रिव्यू इन May 2026 the Supreme Court dismissed Tamil Nadu's plea as premature. Tamil Nadu May 2026 माने केबे लास्ट मंथ और माने एटा जून हला माने लास्ट मंथ कहिथिला तमिलनाडु सेतबेले भी गोटे तार प्लीडिंग देथिला सुप्रीम कोर्ट को कि एटा रोका जाओ बट सेतबेले सुप्रीम कोर्ट कहिथिला कि एटा प्रीमेच्योर स्टेज रे अछि माने एबे तो पेपर रे अछि ना एपर्यंत किछि करि नांती किछि फाइनल हे नै तो एबे हमें कोन एक्शन नै परबो सेटा सुप्रीम कोर्ट कहिथिला ओके बुझ गेलो व्हाट वाज द इशू एबे तम काम कोन रहबा कथा जेतु तम माने एबे जानि न किछि पॉलिटी तम माने मु एक्सपेक्ट करछि माने जो माने नुआ बैच पॉलिटी तम माने पढि नथिबो सो ट्रिब्यूनल हठात मु पढे परिबिनी हला बट इफ एनी तम मान तो जानि छ तम मान कर काम होला जो माने क्लास करछ जाय कि पढिबो अगेन बारंबार हम से जिंस गुडा को बहुत सारा क्लासेस रे भी पढि छु और मु तम कहि छि से जिंस रा जाय कि देखि देबो टिके पॉलिटी बही रे आर्टिकल 261 262 263 ये सब ट्रिब्यूनल कोन केमिति फॉर्म हुए ये सब जिंस गुडा तम माने परे धीरे धीरे जान दबो हला कि चिंता नै बट दिस वाज ऑल द इशू अबाउट द मेक्केडाटू डैम इशू बुझलो एमती भी सिंपल क्वेश्चन तुमको बचा दबो मेक्केडाटू डैम टा को रिवर रे अछि हला ओके सो एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूशन जिंस गुडा को okay so who controls the water again ए जिंस गुडा को हमें माने पढ़िया को पड़िबो स्टेट सब्जेक्ट तीनटा लिस्ट हमर अछि कोन कोन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट हला को शेड्यूल रे अछि ये हमारा क्या शेड्यूल 5 शेड्यूल सुधा के मन रखियो कहितली हां तो एफ रे कोन हां फेडरल माने कोन फेडरल माने स्टेट आउ सेंटर रो पावर को बुझे हला तो शेड्यूल 7 जोटा कि तमरो डिवीजन ऑफ पावर कथा कुए कि स्टेट पाखरे कोन कोन पावर रही छी आ यूनियन पाखरे कोन कोन पावर रही छी तो किछरा सब्जेक्ट्स अछि यूनियन लिस्ट अंडर किछरा सब्जेक्ट अछि स्टेट लिस्ट अंडर किछरा सब्जेक्ट अछि कॉन्करेंट लिस्ट अंडर किछरा सब्जेक्ट अछि यूनियन लिस्ट रे किछि जो जो सब्जेक्ट्स अछि केतरा सब्जेक्ट अछि यूनियन लिस्ट रे बोधे आउ स्टेट रे स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट तमे सबु ना न मन रखले भी केतेटा अछि त मन रखिबो यूनियन को टॉपिक ऊपर रूल बने परिबो लॉ बने परिबो सेंट्रल गवर्नमेंट को टॉपिक ऊपर लॉ बने परिबो स्टेट गवर्नमेंट को टॉपिक ऊपर लॉ बने परिबो आउ एमिति किछि सब्जेक्ट्स जो तरे तमरो यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बने परिबो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बने परिबो से गुडा का हमरो कॉन्करेंट लिस्ट रे आसे हला तो ई वाटर होची गोटे स्टेट सब्जेक्ट हला तो स्टेट सब्जेक्ट माने लॉ के बने परिबो स्टेट बने परिबो बुझ परछ एजुकेशन होची गोटे कॉन्करेंट सब्जेक्ट एजुकेशन ऊपर जदी किछि लॉ बनेबार अछि बोथ सेंटर आउ स्टेट मिसी के लॉ बनेबे बुझ परछ एगुडा तमे पढिबो परे परे टोटल हमर केतरा शेड्यूल अछि 12टा शेड्यूल अछि 12टा शेड्यूल रो 7 नंबर शेड्यूल तमरा होछि फेडरल और डिवीजन ऑफ पावर सेथरे तमरा सब्जेक्ट गुडा को मेंशन अछि सो वाटर जेतु गोटे स्टेट सब्जेक्ट बट दिस इज सब्जेक्ट टू द यूनियंस पावर ओवर इंटरस्टेट रिवर्स हला यूनियन इंटरस्टेट रिवर फिर जदी पड़ी गला जेंति कावेरी महानदी ए गुडा को इंटरस्टेट दीटा स्टेट को देगी पास होची हला तो सेथरे यूनियन किछटा मतभेद माने तार किछि कोन कहबे ओडिया रे तो मु एते जाननी
तांकर किछि गोटे एडवाइस यूनियन दे परिबो मत ओके जदि इंटर स्टेट रिवर अछि तो बिकॉज इंटर स्टेट रिवर मु कहली ट्रिब्यूनल फॉर्म हुए ट्रिब्यूनल ले तमर यूनियन मेंबर्स माने रुहंती ओके तो सेमती तमर यूनियन रो इन्वॉल्वमेंट आसी जाय अदरवाइज जदि तमर रिवर आउ को स्टेट रे पास होनी गोटे गोटे ही स्टेट रे पास हे कि सरी जाउची सेठी तमर स्टेट किछि भी लॉ बनेबो तांको ऊपर चलिबो हैला हाउ डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड आर्टिकल 262 गोटे अछि जोथरे कि किछि भी वाटर रो डिस्प्यूट हैला देन विल रिफर टू आर्टिकल 262 लेट्स पार्लियामेंट मेक लॉस टू एडजुडिकेट इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पार्लियामेंट चाहिले लॉ बने परिबो हैला जदि किछि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट देखा गला एने जिंसटा कोट लिखा हिची आर्टिकल 262 रे लिखा हिची एंड इवन बार द कोर्ट भी इंटरफेयर करि परिबोनी से मैटर रे बुझला अंडर इट द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 allows the center to set up a tribunal जो ट्रिब्यूनल मु कहउतली as per this act गोटे ट्रिब्यूनल बसा हबो ट्रिब्यूनल रे तमरो सेंटर रे किछि मेंबर्स रहबे स्टेट रे भी मेंबर्स रहबे एंड तमरो डिसाइड करा हबो कि कोन करा जिवो गोटे मीटिंग बसिबो डिसाइड करा जिवो द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जोटा कि 2018 रे सेटअप हिथिला 2018 रे सुप्रीम कोर्ट रो गोटे जजमेंट भी आस्थिला एंड से टाइम रे तमरो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी गोटे सेटअप हिथिला इट ओवरसीज द शेयरिंग ऑफ कावेरी वाटर अमंग कर्नाटका तमिलनाडु केरला एंड पुडुचेरी ओके जोड़ जोड़ देकी पास करूची कावेरी वाटर ऊपर के डिपेंडेंट अछंती कहा को केते पानी कोन मिलिबो ता पे गोटे कमिटी और अथॉरिटी सेटअप हेतिला ऑलरेडी एंड से ईयर रे हम गोटे जजमेंट भी देखिथिलु कोन जदि भी तमरो किछि करिवार अछि नुवा प्रोजेक्ट देन ए मानकर सहमति समस्तंकर दरकार इफ एवरीबॉडी विल एग्री देन ओनली तमे गोटे डैम सेठी सेटअप करि परिबो अदरवाइज नो क्लियर ओके किछरा बेसिक टर्म्स राइपेरियन स्टेट्स माने कोन राइपेरियन स्टेट्स जानना स्टेट्स अलोंग ए रिवर गोटे रिवर जो जो स्टेट देखि पास हुए से स्टेट्स गुडा को हमें कहबा राइपेरियन स्टेट्स ए सब टर्म कोन टाइम कहली मेंस रे आंसर लिखला बेले ए वर्ड गुडा को तुमको मार्क दबो राइपेरियन स्टेट्स माने कोन हैला जमते एठी हमर कोन कर्नाटका तमिलनाडु पुडुचेरी ए सब असले बिकॉज़ इट इज पासिंग थ्रू ऑल दो स्टेट्स ओके मेका देतो हमें पढिलो आर्टिकल 262 पढ़िला आर्टिकल 262 रे कोन हुए पार्लियामेंट चाहिले तमरो लॉ बने परिबो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पे हला एंड कोर्ट को भी से चाहिले बार करि परिबो दीटा स्टेटमेंट रहिला आर्टिकल 262 रे तो से स्टेटमेंट को भाग भाग करी कि दीटा स्टेटमेंट भी क्वेश्चन रे पड़ी पारे कि कोर्ट रो इन्वॉल्वमेंट हे परिबो ना हे परिबोनी को हे परिबो नहीं जदि पार्लियामेंट चाहिला ना कोर्ट इन्वॉल्व हबो नहीं देन कोर्ट विल नॉट बी इन्वॉल्वड प्लस पार्लियामेंट कैन मेक लॉस हला दीटा जिनस हमर अछि आर्टिकल 262 रे नाउ वाटर होछि तमरो स्टेट लिस्ट बट जदि इंटर स्टेट रिवर हैला देन सेठी तमरो यूनियन रो पावर आसी जाउछि ए जिनस गुडा को हमर सेही जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स अछि सेथरे तमरो सब लिखा अछि ओके एटा कोन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ए एक्ट कोन हेतिला देन एटी तमरो ट्रिब्यूनल कथाटा उठिथिला सेंटर गोटे ट्रिब्यूनल बसेबो डिस्प्यूट टाको सॉल्व करबा पे एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओके तापरे 2018 रो वर्डिक्ट कोन थिला समस्त एग्री कले ही तमरो नुआ प्रोजेक्ट सेटी सेटअप हे परिबो एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ओके एंड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये डिसाइड करे कहा को केते पानी मिलिबो वाटर शेयरिंग जिनसटा सब ईयर जेहेतु कावेरी इज अ डेफिसिट बेसिन ओके पुकोडा जेहेतु कावेरी इज अ डेफिसिट बेसिन सेठी किछि बनेबा आगुरु समस्त स्टेट्स रो परामर्श एंड अप्रूवल
नबा निहाती दरकार बुझल ठीक बेस हो गला कि जो मैंने फर्स्ट क्लास करूछ यू हैव टू गो इन डेप्थ मुझे ही पढ़ाए जस्ट ए हिंट कि मुझे केमती पढ़ाए आ तुम मन को केमती पढ़ा पड़ो तुम मोठू पढ़ कि तुम जो पढ़ दैट इज योर विश मत पैसा मिल मुझे पढ़ेबी तुम एग्जाम दब तुमको जो भी कंफर्टेबल बट पढ़ार अच्छी है आमती डेप्थ रे पढ़ार अच्छी करेन्ट अफेयर्स ना हम ना लिखिक देदेवी है ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन जी भी पढ़ एंड आई होप जी भी पढ़ आंसर कर ऑनलाइन जो मैंने भी देखु ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन One and two. Why not three? 1 and 3. Why not 2? कोड 16 अछि एंट्री 17 मु कहले 17 नंबर रे ये जिनसटा लिखा है तुम 57 नंबर लिस्ट रे सॉरी 56 नंबर लिस्ट रे ये जिनसटा लिखा है सो आर्टिकल 262 रे कौन कहला पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एंड टू बार द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सच मैटर्स इज दिस राइट इज एवरीवन एग्रीइंग इट इज राइट सेकंड हला water is in the state list entry 17 but जदि interstate कथा उठिला then entry 56 अनुसार union list under रे सेटा पळे आसीबो तो union will act in that case okay कि union निचर मत दे परिबो से केस रे जदि interstate water dispute कथा आसिला तो this is also correct interstate river water dispute act को article under रे फॉर्म इतला article 263 under रे फॉर्म इतला ना कोटा एटा को आर्टिकल 262 रे जिनस लिखा है सेटा म तुम कहली आज जाय कि आर्टिकल 261 262 263 क्लियरली पड़ो को आर्टिकल कौन लिखा है ना ये आर्टिकल तो पानी विषय लिखा है एमती पढ़ले हेनी पानी विषय कौन लिखा है जाके पढ़ा पड़े कह so statement 1 is correct we have already discussed statement 2 is correct statement 3 ये जो act this was enacted under article 262 and not 263 article 263 deals with the interstate council it is also related with interstate water dispute but tribunal और ये जो कौन ये act था से article under रे आसी नथिला article 263 रे तमरो interstate council विषय लिखा है जी ओके तो एटा भूल टिके हे जबो अदरवाइज 261 262 263 सब तमरो ए पानी डिस्प्यूट सहित ही रिलेटेड बट को आर्टिकल एक्जेक्टली कोन अछि ओके सो आंसर कोन हो 1 and 2 ओनली ऑनलाइन समस्त ठीक कहि चंदी ओके नेक्स्ट टॉपिक हैला सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया काई के आसला न्यूज़ रे इट अगेन वी कैन रिलेट इट टू साइंस एंड टेक रे हमरो हेल्थ डिजीजेस टॉपिक अछि सेति पे
करंट अफेयर्स रे पढ़लम गले सिलेबस रे भी पढुथबो करंट अफेयर्स रे भी माने न्यूज रे भी थिबो इंपोर्टेंट हे जिवो सिलेबस अंडर आसिले हेल्थ एंड डिजीजेस अंडर आसिले हला प्लस गोटे न्यूज आसिला एंड व्हाई वाज इट इन न्यूज सिकल सेल एनीमिया टू बी इरेडिकेटेड बाय 2047 द्रौपदी मुर्मू हमर कहले तो रिसेंटली तमरो हेतिला इंटरनेशनल सिकल सेल एनीमिया डे हेतिला केबे वर्ल्ड मलेरिया डे ये सब गुड़ा पड़ोनी एटा भी पड़ो मैच द फॉलोइंग करके तुमको सब पचार दो वर्ल्ड मलेरिया डे के माने केबे ऑब्जर्व करा जाए किंबा सिकल सेल एनीमिया डे केबे ऑब्जर्व करा जाए केबे जून मास जून रो करंट अफेयर्स पढ़छु तो माने लास्ट वीक रो पढ़छु माने लास्ट वीक रो हेतबो जून 19 हला तो जून 19 रे हमें वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे ऑब्जर्व करू एंड से दिन रे तमरा ए सब किछटा गोटे जिंस हेतिला जोथरे कि द्रौपदी मुर्मू कहले कि पूरा पूरी हमें हटे देबा बाय 2047 इज अ वेरी इंपोर्टेंट year for us. Why? We are planning to become Vikshit Bharat. Mane we are planning to become a developed nation. A developed nation. Right? तो आउट कौन थिला तमरो ईयर गुडा को भी मैं बारंबार तुमको 2070 रे कौन टारगेट अछि 2070 सुधा नेट जीरो एमिशन ओके सो जदि हमको 2047 सुधा डेवलप्ड नेशन हबार अछि तो तापे हमको किछटा बहुत सारा जिंस अचीव करिया को पड़िबो से भितरु एटा भी गोटे हमर टारगेट कि टोटली हमें इराडिकेट कर दबा सिकल सेल एनीमिया प्लान रखि जो सेमिति हमर आउट अछि ईयर मलेरिया को एलिमिनेट करबा पे गोटे ईयर अछि श्योर गोटे ईयर एबे जिंदा में 2047 पचालु कहलु सिकल सेल हटे दबा मलेरिया टोटली माने जीरो मलेरिया काउंट हमर रहइबो बाय दिस पर्टिकुलर ईयर 2030 हैला 2030 सुधा हमें मलेरिया इराडिकेट करिवार भी प्रोविजन अछि ओके चलो President of India graced the International Sickle Cell Day, which is on June 19 at Omkareshwar, Madhya Pradesh, celebrating a major health milestone. So, sickle cell disease रे कौन हुए? Sickle cell disease रे हुए कौन? को organ को affect करे कि हमारे body रो को part को affect करे? No idea. Blood related, yes. Good. It is a group of inherited chronic blood disorders that alter the structure of the hemoglobin. Hemoglobin ro structure ta change कर दबो जदि disease टा जन को हैला. The vital protein within the red blood cell for carrying the oxygen throughout the body. So instead of remaining flexible and round, the affected red blood cell mutate माने multiply हे जिबे into rigid crescent or sickle shapes. sickle नाट पड़िला कोन पे sickle shape रहे जिबे RBC गुडा को हैला पूरा rigid हे जिबे आ flexible रहेबे जनरली तमे देखिबो red blood cell गुडा को round थांती flexible rubbery kind of सेंते थांती बट से स्ट्रक्चर ता पूरा चेंज हे जिबो जदि जण को ए डिजीज ता हैला तो हैला so SCD is a hereditary important is it hereditary or it's not hereditary it's माने जदि तमरो फैमिली रे कहा को हेछि देन तमरो हबार चांसेस रहउची
ओके जेनेटिक डिजीज एटा गोटे एंड ये सब गोटे गोटे स्टेटमेंट भी हो पारे इज इट हेरिडिटरी से ताको बुले दबो नॉन हेरिडिटरी डिजीज कि नॉन जेनेटिक डिजीज बट जो तुम पढ़ी एटा गोटे हेरिडिटरी एटा गोटे जेनेटिक डिसऑर्डर देन तुम से स्टेटमेंट एनालाइज कर परियो तो जेनेटिक डिजीज caused by a structural mutation in the HBB gene will not go into depth HBB gene kono na okay which provides instruction for making beta globin which is a component of hemoglobin it follows the autosomal recessive inheritance pattern जो माने biology students से माने word गुड़ा बुझ परिबे otherwise बुझ परिबेनी a person develops the disease only if they inherit two abnormal hemoglobin gene जदि parent body ठारू दीटा abnormal hemoglobin gene आम body टा आसिला then only आमे सेटा inherit करिबा that too one from each parent तो हेबार प्रोबेबिलिटी एते नुह माने एते कॉमन नुह बिकॉज़ एटा बहुत रेयर ना गोटे दीटा पेरेंट्स रु तमरो गोटे गोटे जीन आसियार अछि देन ओनली तमरो कहि परिबो सेटा इनहेरिट हे कि आसी छी राइट individuals who inherit only one mutated gene copy they are called carriers okay or having the sickle cell trait माने अछि तांग पाकर अछि carriers generally live healthy lives without symptoms जदि गोटे पेरेंट टू ही हमको आसिला गोटे जीन आसिला कैरियर आछि हला हम बॉडी रे भी अछि बट स्टिल वी कैन लिव हेल्दी लाइफ विदाउट एनी सिम्पटम्स बट कैन पास द म्यूटेटेड जीन ऑन टू देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन बुझिलो मो बापा की मारू जदि मते आसिला को जण कोठु भी आसिला मते न होई पारे बट से जीन तो जदि मो छुआ को पड़ेला ताको ही जाय पारे जदि फिर ता बापा टू से आसीबो this is how the cycle continues तो हबार प्रोबेबिलिटी बहुत कम हला बट कैरियर्स प्रेजेंट रही पारंती कैरियर्स माने कोन हमें पढिलु जदी गोटे ही जीन गोटे पेरेंट आसिला आ जदी दीटा पेरेंट दीटा जीन आसिला माने हला डिजीज आ डिजीज हला माने हेमोग्लोबिन रो स्ट्रक्चर चेंज हला एंड से गुडा को सिकल शेप रही गला सेति पे ताको सिकल सेल डिजीज बोली हो ओके so generally they block the small blood vessels causing severe pain episodes and tissue damage हे जिवो obviously कोन में red blood cell गुडा को हार्ड हे गले tissue damage हबो ना बिकॉज़ सेटा ही फ्लो करे हमर बॉडी थ्रू आउट द बॉडी से गुडा को डैमेज जदी स्ट्रॉन्ग माने रिजिड हे गला देन हमर टिश्यूज गुडा को बर्स्ट हे जिवो रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिकल सेल्स लीड टू परसिस्टेंट माने थकावन तम कौन थकिबे बेसी ब्रेथलेसनेस ए सब वीकनेस ए सब सिम्पटम्स देखा जाए एंड रिपीटेड स्प्लीन इंजुरी reduces immunity obviously increasing the vulnerability to serious infections long term oxygen deprivation can affect the brain lungs kidney and other organs as well okay so it तमे देखो नॉर्मल आमर आरबीसी केमते देखा जाए फ्लो करे नॉर्मली राइट नॉर्मल आरबीसी एंड दिस इज हाउ ए सिकल शेप्ड आरबीसी लुक्स लाइक एंड इट तमे देखि परथबो एगुडा को पूरा रिजिड हे जिवो जाम कर दबो तमर ब्लड वेसल्स गुडा को एंड टिश्यूज गुडा को फाटे जिवो ओके सो किछिटा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अछि तमरो हाइड्रेशन जते पानी पीबो एटा तमरो टिके हेल्प करे अदरवाइज किछिटा मेडिसिन्स भी अछि आउट अछि तमरो हाइड्रोक्सी यूरिया थेरेपी इट इंक्रीजेस द फटल हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन reducing the sickling and pain episode antibiotics prevent severe infection especially in infants and young children blood transfusions used to reduce the complications such as stroke and severe anemia blood transfusion भी तमे करि परिबो these are the provisions medicines भी अछि however केते effective होबो सेटा तो कहबनी but अछि ओके आ तमे चाहेले blood transfusion भी करि परिबो vaccination भी अछि but only for limited to young children किमा infants मन पे ओके तो एते जिंस पढे हम दरकार नै बट सिकल सेल ता कोन को जिंस को इफेक्ट करे कौन चेंज हुए बेसिकली आरबीसी रे चेंज हुए तुम जान नथिलो सिकल सेल ता कोडा को इफेक्ट करे सेटिक जान लो ना
सेतिकी इंपोर्टेंट और केबे सेलिब्रेट कराइतला तमरो सिकल सेल डे ओके ओके न्यू एफएटीएफ वाइस प्रेसिडेंट ये हेचंती विवेक अग्रवाल सो एफएटीएफ कोन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेलो has appointed union culture secretary Vivek Agrawal is already union culture secretary तांको appoint करा हेची as the vice president of the financial action task force of the global anti money laundering and counter terrorist financing watchdog for the 2026 to 27 term तो टिके आमे एफएटीएफ विषय जानिबा दरकार जेतु एटा न्यूज रे आछि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमर न्यूज रे आछि हला एबे जेंती नाटो विषय पचार थिला ए एग्जाम रे नाटो रे केतरा मेंबर नाटो केबे फॉर्म हेतिला इंडिया थिला कि नै सेतबले फाउंडिंग मेंबर एम कोन कोन एंड एक्जेक्टली से नंबर चेंज कर देला वर्तमान नाटो रे केतरा मेंबर माने 34 मेंबर एक्जेक्टली 32 मेंबर ना कोन सेटा को 34 कर दे एमती नंबर से चेंज कर दोछि हला सो एटा केबे एस्टैब्लिश हितला एफएटीएफ तमरो एफएटीएफ कोन कहली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स केबे सेटअप हितला 1989 रे बाय द G7 कंट्रीज जानथिबो G7 द्वारा एटा एस्टैब्लिश हितला कोन पई ए जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस गुडा को तमे देखु छ ताकू प्रिवेंट करिया पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग and later it was expanded in 2001 established ହେଇଥିଲା 1989 रे 2001 रे एटा एक्सपांड करा गला टू काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो कंट्रीज माने टेररिस्ट मान को फाइनेंस करूची से मान को भी माने केमिति कंट्रोल करा जिवो से रिलेटेड जिंसटा आगुर नथला जते बेले बना हैला इट वाज ओनली फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे बना हैतला प्रोविजन थिला एटा माने ऑब्जेक्टिव तंगर थिला एटा 2001 रे आउट ऑब्जेक्टिव ऐड हेगला हैला सो एफएटीएफ मॉनिटर्स कंट्रीज टू एंश्योर कंप्लायंस विथ इट्स 40 रिकमेंडेशन तार 40 टा रिकमेंडेशन अछि सब कंट्री गुडा को से 40 टा रिकमेंडेशन फॉलो करूछंती कि नै सेटा से देखिबो एंड 40 टा रिकमेंडेशन तुमको मन रखे टोटली दरकार नै तमे खाली मन रखिबो केतटा रिकमेंडेशन ओके The FATF's framework is designed to help countries tackle illicit financial flows with recommendations covering policies, money laundering, terrorist financing, preventive measures, transparency and international cooperation. ये सब जिनस FATF countries मानु को help करिवो. Okay. So AML CTF कौन? Anti money laundering, काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग ए पॉलिसीज गुडा रही छी एफएटीएफ रे ए सब जिंस जोटा लिखा है से जिंस गुडा को एठी लिखला दिस आर द की एरियाज जो जो एरिया गुडा को तुमको कहली एक एरियाज ऊपर एफएटीएफ रो फोकस रही छी ओके एंड केतरा मेंबर हमरो 40 टा मेंबर कंप्राइजिंग 38 jurisdictions and 2 regional organization हैला गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमिशन ए माने दीटा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अछंती ता छोड़ा 38 टा तमरो अलगा मेंबर्स अछंती बुझले 40 को हमें दी भाग रे डिवाइड करलु 38 जुरिसडिक्शंस रहिला दीटा तमरो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रहिले से दीटा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कोन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमिशन ओके India became a member in 2010. Okay. India, this is not in by India, by the way. G7 country बने थेला 1989 रे, है ना? तो इंडिया तो सब it was not a part of G7. एक आपको एक्सपांड करा गला 2001 रे इंडिया जॉइन हैला 2010 रे जाकी, है ना? हेडक्वार्टर्स कोठी अछि पेरिस रे. OECD कोन?
सो एतिर आमे बेसी डीप बोलू कि बोलूनी बेसिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एने सब जिनस हम जानु से कोठी बे एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन ने पचरछु कोन ए सब जिनस पचरछु ए सब जिनस हम जान दिबा दरकार हैला बट कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज ए नॉट द करंट अफेयर इश्यू इट इज ए कंटेम्पररी इश्यू माने बहुत वर्ष हलानी न्यूज रे रही आछि सेति पे सेटा इंपोर्टेंट ताको डेप्थ रे पढिबा नियत दरकार एटा तमर बेसिक माने स्टैटिक जीके से माने कोन करंट अफेयर स्टैटिक तो कहि परबे करंट अफेयर बट नॉर्मल माने एते डीप रे जिबा दरकार नै ओके पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पीएम टू हैंड ओवर 2400 crore incentives to the employees okay and this is under the पीएम विकसित भारत रोजगार योजना कौन है योजना टा ऑलरेडी डिस्कस हेतिला क्लास रे कौन जो नुआ एम्प्लॉयज माने जॉइन करेंगे गोटे कंपनी रे तांको किछटा इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा जिवो ओके ता सहित एम्प्लॉय माने को एम्प्लॉय माने तो पाइबे ही पाइबे इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स माने को भी किछटा इंसेंटिव्स मिलिबो फॉर जॉइनिंग माने नुआ कैंडिडेट्स को से माने जॉइन करौचंती एम्प्लॉयमेंट दोचंती सेति पे एम्प्लॉयर्स माने को भी इंसेंटिव मिलिबो एम्प्लॉय माने को तो जेमती तम ईपीएफ गुडा को रिडक्शन हुए को मिले से सब रहबो सो पार्ट ए पार्ट बी दीटा पार्ट रही छी पर्टिकुलर योजना रो पार्ट ए रे तुमको रही छी खास करी कि एम्प्लॉयज मान को जे काम करूची हैला पार्ट बी रे एम्प्लॉयर्स मान को सपोर्ट दिया जेबो जे चाकरी दउची ओके दीटा पार्ट रहिला पार्ट ए रे केते मिलिबो इंसेंटिव 15,000 up to 15,000 not exactly 15,000 up to 15,000 for first time employees registered with the EPFO कौन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना प्रथम थर पे EPFO रे जे रजिस्टर करबा तांको अप टू 15,000 पर्यंत से सैलरीड इंडिविजुअल्स मानन को मिलिबो तमरो 15,000 पर्यंत इंसेंटिव एम्प्लॉयज विथ ग्रॉस वेजेस अप टू 1 लाख आर एलिजिबल हैला 1 लाख रु अधिक जदि तांकर दरमा थिबो दरमा मासिकिया दरमा कथा मु कहूची 1 लाख रु अधिक थिले दे विल नॉट गेट दिस इंसेंटिव 1 लाख रु कम थिबो जोडा कि जनरली थाए केते 20 25 30,000 40,000 मैक्सिमम 50,000 लोक पाउथबे है कि नहीं चलो 80 90,000 भी पांतो से मन को पे एटा रही छी बट लक्ष्य ऊपर हे गेले नहीं ओके ऑनलाइन फाइनेंशियल लिटरेरी कोर्स फॉर एम्प्लॉयज जो मैंने नुआ जॉइनिंग हेथिबे तांको फाइनेंशियल कोर्सेस गुडा को भी प्रोवाइड करा जिवो हैला केमिति सेविंग करिवे कोडी सेविंग करिवे म्यूचुअल फंड ए सब जिंस गुडा तांको भी गोटे कोर्स करा जिवो पार्ट बी आसिला एम्प्लॉयर्स मान को पे हैला जो थी कि नुआ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिवा पे तांको प्रोत्साहन दिया जिवो इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स okay incentives to employers of all sectors for 2 years and manufacturing sector पे 4 वर्ष पर्यंत इंसेंटिव प्रोवाइड करा जिवो अलग अलग सेक्टर अछंती हमरो हैला सर्विस सेक्टर तो जितकी भी सर्विस माने सेक्टर हेले तांको 2 वर्ष पर्यंत इंसेंटिव प्रोवाइड करा जिवो बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे जदी तम जने एम्प्लॉयमेंट दोउची ताको 4 वर्ष पर्यंत इंसेंटिव प्रोवाइड करा जिवो काहा को एम्प्लॉयर्स मानंगु पार्ट बी वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली द एम्प्लॉयर्स केते पाइबे विल रिसीव अप टू 3,000 पर मंथ फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय केते एम्प्लॉय से माने नुआ जॉइनिंग करूचंती तो से माने दे आर गिविंग जॉब हमको तो दरकार ना हम केमती स्टार्टअप्स को बे माने कोन करछु सपोर्ट करछु बिकॉज़ सेठी बहुत जन को जॉब मिलिबो हैला जने नो डाउट जने रिस्क सब करबो बट जॉब गारंटी बहुत जन को मिलिबो जॉब रो चांसेस मिलिबो बहुत जन को राइट तो ए एम्प्लॉयर्स मानो को माने तांको एनकरेज करा होची कि तमे जॉब दियो अदरवाइज किछटा एम्प्लॉयर्स अछंती नाय जन को तो काम हो जाउची आमे ताको ही पूरा प्रेशर कर दबा आ आमे 3-4 जन को रखिबानी बट जदी ताको इंसेंटिव रे गोटे लालच दे दिलु देन से 3-4 जन को रखिबो ए 3,000 पाइबा आसरे
पर पर्सन 3000 एबे हमको कमिशन मिलिबा मनकर तुम रखिबे कि नहीं सेमती दिस इज वन टाइप ऑफ कमिशन हला पर एम्प्लॉय पर मंथ 3000 तुमको मिलिबा एंड ए जिंसटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोक मान को 4 वर्ष जाय मिलिबा आ बाकी सब सेक्टर लोक मान को 2 वर्ष जाय मिलिबा हला तो दिस वाज योर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना बहुत माने वर्ष ऊपर हेलानी इंप्लीमेंट है की हला बट एबे एटा थिला एम्प्लॉय मानन को हैंड ओवर कले पीएम किते एतिकी कोटी रो इंसेंटिव्स okay pm has handed over. Okay, so recently the Prime Minister of India dispersed incentives amounting to approximately 2,400 crore under the PMVBRY Viksit Bharat Rozgar Yojana. It is a flagship employment generation scheme launched by the Government of India. PM lekha hichi mane it is a central government initiative to encourage job creation in the formal sector. दीटा सेक्टर अच्छे हमरो इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर जो माने जॉइन हुआ जनरली ईपीएफओ रे तो तांकर रजिस्ट्रेशन हुए राइट तो फॉर्मल सेक्टर पे एटा फोकस कराई छी द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयर्स एंड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज promoting increased enrollment in the EPFO. It aims to boost employment opportunity, strengthen social security coverage and support the vision of developed India by 2047. Okay, so as we have already discussed data part achi aro part A part B. Part A employees man ko pai, part B employers man ko pai. Okay, kete dia jibo ithi up to 15,000 seta bi dita installment dia jibo जो एम्प्लॉयज मन को दिया अप टू 15,000 that will be given in 2 installments. Employee with salaries up to 1 lakh will be eligible. We have already seen this. All payment to the first time employees under part A will be made through the DBT direct benefit transfer using Aadhaar bridge payment system. Part B employers मन को पाएं है ना. It will encourage generation of additional employment सब सेक्टर रे स्पेशल फोकस दिया है ची मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आमे आत्मनिर्भर भारत को कहूछु जिनस बनेबा पिछे हम सेति में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर अधिक फोकस दिया है. The employers will get incentives in respect of new employees with salaries up to 1 lakh. एटा भी कोन जो नुआ एम्प्लॉय जॉइन करे पे तांकर भी सैलरी लिमिट अछि 1 लाख पर्यंत थिले ही तांको से इंसेंटिव मिलेबो. The government will incentivize employers up to 3,000 per month for 2 years and for each additional employment sustained for at least 6 months. माने जो जॉइन करेगी इंसेंटिव नहीं कि तांको चाकरी रो कर देबो सेमथ हबने एटलीस्ट 6 मास पर्यंत तमर से एम्प्लॉयर माने एम्प्लॉय रहबार अछि ऑर्गेनाइजेशन. फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एटा 4 वर्ष पर्यंत दिया हबो. Okay, payment to the employers under part B will be made directly to the PAN linked accounts. Clear? Viksit Bharat Rozgar Yojana. Okay, then comes here UCC. What is UCC? बोल लगछे की कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल लिखा है माने मेंशन करा है यूसीसी विषय रे विच आर्टिकल पचार ना कौच आर्टिकल 44 deals with uniform civil code. कौन एटा यूनिफॉर्म माने तो बुझुथबो समस्त समान राइट. तो कौन को जिंस को एटा नै कि हमरो इक्वालिटी कथा जो हम कहू को जिंस को नै कि एटा करा है छी एटा कोड बेसिकली सिविल कोड. सिविल माने वी ऑल आर सिविलियंस. सिविल कोड समस्त को लागू हबो माने नॉर्मल सिविल लोकन को लागू हबो गोटे कोड आ समस्त को इक्वल करे कि गोटे जिंस हम लागू करबा बट को रिलेटेड को स्टेट्स हमर ए पर्यंत
यूसीसी लागू करछन्ती तांको स्टेट रे गोवा इज गोवा स्टेट को स्टेट पचारले गोवा गोटे स्टेट हाँ उत्तराखंड आउ आके नहीं उत्तराखंड केबे करथला रिसेंटली मैंने केबे 2025 तुमको ऑप्शन दबो उत्तराखंड रे यूसीसी केबे लागू होला 2021 22 23 24 22 23 24 25 2024 रे लागू होइतला हैला एटा तमरो अछि कहार न्यूज़ को स्टेट रो न्यूज़ एटा मध्य प्रदेश सी बिलटा कोन माने प्रेजेंट करिवो पास करबा कथा मेटी किछि भी कोन हैला प्रेजेंट कराबो दैट कैन पास दैट कैन फेल तो एमपी वर्तमान से चर्चा रे अछि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रे कोन हुए एससी एसटी मन को पे लागू हुए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहले समस्त को पे लागू हुए यूनिफॉर्म तो एससी एसटी मन को ऊपर भी लागू हुए सेति पे तो ये सब बड़ डिबेट रे हुए हैला यूनिफॉर्म ना दिया ही छी बट ट्राइबल्स मान को पे एटा लागू होबा नाही कोन पे ट्राइबल मान को किछिटा कस्टमरी राइट्स तांकर निजरो कल्चरल राइट्स अछि तमे सेथरे जदी छेड़छाड़ करिवो देन बहुत सारा तुमको प्रॉब्लम देखे फेस करिया को पड़िबो हैला जेमते कि गोटे एग्जांपल हेथिला उत्तराखंड रे पॉली एंट्री मैरिज माने गोटे झियो दीटा स्वामी को बाहाई थिबो हैला हस कहीं हाँ तो रिसेंट केस बात थिला कि से प्रेग्नेंट थिला बोली से केस तो बहुत आगु रहला नॉर्मल लोक जदि दीटा बाहाला सेटा कोन इट विल गो अगेंस्ट द लॉ बट तांको कोन बा छडा गला से किन दीटा बाहाई गला तांकर कम्युनिटी रे सेमती चली आसीची एंड से जदि से माने ए यूनिफॉर्म सिविल कोड तांको पे लागू ही थांता देन सेटा अगेंस्ट द लॉ हे ये थांता बिकॉज़ गुडे विरुद्ध रे लॉ विरुद्ध रे से माने गले बट से मान को एक्सक्लूड करा जाई छी एससी एसटी जो माने भी ट्राइबल कम्युनिटीज अछंती से मान को एक्सक्लूड करा जाई छी ता सहित एक हक मूवी देखछ कोन तापसी पन्नू ना हक मूवी साहबानो केस ट्रिपल तलाक जिनसटा हैला सेटा कोन थिला मुस्लिम मान को ऊपर ही माने तांकर राइट सेटा जेमते हमर हिंदू मैरिज एक्ट गुटे अछि मुस्लिम मैरिज रे तांकर किछि गुटे प्रोविजंस अछि तो तांको प्रोविजन हिसाब रे कबूल है कहले दे आर मैरिड बट तमे माने इटे कबूल है कहले भाव हे परिबने कि तमे तलाक कहले हे परिबने हैला तो से मूवीटा बढ़िया मूवीटा तो देखिन जदि देखिया कथा तमन तो खाली फालतू मूवी देखिबो काहे कि सिंधी मूवी देखिबो जोरा तुमको टिके किछि सिखिबो सेटू तो साहबानो केस बहुत इंपोर्टेंट केस गोटे हैला ट्रिपल तलाक रिलेटेड सेटा थिला कि सी कोन कला तार फर्स्ट वाइफ को न कहि कि न किछि करि कि सा गोटे मैरिज करि कि पळे आसिला एंड तलाक भी देई नथिला तलाक से कहि दला तलाक तो तलाक हे गेला बट शी वाज नॉट रेडी टू माने एक्सेप्टेड साहबानो जे थिला तार फर्स्ट वाइफ साहा और बानो तार ना कोन थिला उठ तो सी एक्सेप्ट कलानी से जाई कि अलगा कोर्ट्स रे सब प्लीड कला कि नाय मु राजी नुह तलाक दबा पे एमति केमति तलाक कहले हे जेबो बट लोक माने इंटरफेयर कले नै बिकॉज़ इट वाज ओनली तांकर कोन मुस्लिम मानकर प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट सेतरे इन्वॉल्व होबनी कि हाई कोर्ट सेतरे इन्वॉल्व होबनी बिकॉज़ एटा तांकर निजर जिंसटा हला रिलीजियस मैटर गुडा तो फिर से कौन करिवो कहा पाकु जीवो से ग्राम पंचायत माने तांकर जो गाँ रे कहला तांकर सरपंच को कहला तांकर जे भी मुस्लिम मानकर तांकर लीडर को कहला नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट तापरे फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाई से गला एंड सेठी बहुत हियरिंग्स परे ई जिंसटा सेठी हेतला ट्रिपल तलाक केस त तमर हेतला एंते बहुत सारा केसेस हेची जेमति कि सबरीमाला केस सबरीमाला केस तो जानते को वुमेन वेर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेंपल्स व्हाई जदि तुम यूनिफॉर्म कथा कहूछ तुम इक्वालिटी कथा कहूछ देन व्हाई वुमेन विल नॉट बी अलाउड
ताको नहीं कि फिर इश्यू है तो यूसीसी सब बेले तुम कन्फ्लिक्ट टॉपिक टा माने बहुत डिस्कस्ड और डिबेटेड टॉपिक बिकॉज यूनिफॉर्म वर्ड लिखा होची बट सेथरे आमे एक्सक्लूड कर दोछु ट्राइबल्स मान को कि किछि रिलीजियस मैटर रे आमे इन्वॉल्व होवा को चाहनु सेठी ओके so 17th June Madhya Pradesh Chief Minister announced that UCC bill would be introduced in the upcoming monsoon session of the Madhya Pradesh Legislative Assembly tankara state legislative assembly re introduce habo 5-day session schedule achi tankara 20 July ru 24th July and may also see the bill passed it may be passed it may not be passed okay so this makes Madhya Pradesh one of the most significant states to push for UCC legislation following Uttarakhand's landmark move in 2024. UCC is a single set of civil laws को ही से ये करे applicable to all citizens of India regardless of the religion but it covers personal matters including marriage, divorce, inheritance, adoption and succession ये पांचटा वर्ड बहुत इंपोर्टेंट ହେଲା को टॉपिक्स रे यूसीसी लागू कर परिबो कि यूसीसी तमे कंसीडर कर परिबो मैरिज रिलेटेड किछि भी इशू हैला कि डिवोर्स रिलेटेड तलाक ट्रिपल तलाक कथा कहली हैला इनहेरिटेंस माने कहा को केतिक संपत्ति मिलिबो कि कहा को कोन मिलिबो इनहेरिटेंस बापा मां ठु कोन संपत्ति माने झियो मान को मिलिया कथा कि नै पुओ मान को मिलिबो कि कहा को मिलिबो ए सब जिंस गुडा बिकॉज़ ट्राइबल लॉस तांकर किछि गोटे अलगा थाए अगेन एडॉप्ट करबे जिंसटा एंड सक्सेशन ओके एतिकी वर्ड गुडा को इंपोर्टेंट रिलेटेड टू यूसीसी सो करेंटली इंडिया फॉलोज डिफरेंट पर्सनल लॉस फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज एबे भी हमर अछि अलगा लॉस इंडिया रे लागू हिने ना एससीसी स्टेट वाइज लागू होछि एटा इंडिया रे सेंट्रली लागू होबार भी समस्त को इच्छा अछि बट एई किछटा कंट्रोवर्सी जेको से इंडिया रे वर्तमान हे पारुनी बट किछटा स्टेट्स करूछन्ती हैला सो अलगा अलगा जो पर्सनल लॉस अछि अलगा अलगा कम्युनिटीज रो फॉर इंस्टेंस हिंदू पर्सनल लॉ गवर्न्स हिंदूस मुस्लिम पर्सनल लॉ जोटा को तमे को शरियत मुस्लिम पर्सनल लॉ that governs the Muslims hello and the Indian Christian Marriage Act applies to Christians तो अलग अलग religions मान करो अलग अलग laws अच्छी related to marriage related to divorce hello UCC would replace this with one common code it है entire provision of uniform civil code so think of personal laws like different tool books for different teams on the same field मैंने कौन बुझला गोटे सेम फील्ड रो अलग अलग टीम अछंती अलग अलग टीम रो अलग अलग रूल चलिबो कि क्रिकेट रो रूल ही चलिबो आउट माने आउट तमे सेट कहि परबे ना हमर हिंदू लॉ हिसाब रे आउट नै कि हमर मुस्लिम लॉ हिसाब रे आउट हम तो कहि परिबो ना तो सेमते भाबो यूसीसी वुड गिव एवरीवन द सेम रूल बुक गोटे रूल ही तमरा रहबो So marriage, divorce and inheritance follow the same rules regardless of which religion you follow. The idea is equality before the law. The debate is whether it respects India's religious diversity. तो इंडिया रे तो हमर बहुत सारे रिलीजन्स अछंती समस्त को रिस्पेक्ट करी कि सेटा करिया को पड़िबो हो कि नै हमें कहार रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट करी कि किछि भी करि परिबा नै so as I said article 44 deals with your UCC. So article 44 of the constitution places UCC under the DPSP. DPSP को article 36 or 51 DPSP हला त माने स्टेट अंडर ए सब रोइला तो UCC रे हमर अगेन स्टेट अंडर रे रहउची आर्टिकल 44 रे रहउची पार्ट 4 एटा कोन एते भाबछ कोन श्योर पार्ट 1 कोन पार्ट 2 कोन
Part 3, Part 4, Part 5. The union. Part 4 एटा तमरो फंडामेंटल ड्यूटीज. Part 5 टा the union. अच्छी सेमती केतरा पार्ट अछि? Okay. So the Madhya Pradesh government formed a 6-member high-level committee in April 2026 to draft the UCC bill. The committee is chaired by retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Prasad Desai. गोटे कमिटी फॉर्म करा हितला April 2026 रे UCC bill विषय डिस्कशन करिया पे से कमिटी रो हेड किए चेयरपर्सन किए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई से सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड कौन जज and was given 60 days to submit a detailed report. Hello. The committee has been conducting outreach across Madhya Pradesh, collecting suggestions from the citizens of different religious communities. समस्तंगु suggestion निया ही छि 2 मास रे. It is carefully studying the models already implemented by Uttarakhand and Gujarat. Gujarat रे होला नेकी हे नी बट चली छि गुजरात रे भी प्रोविजन चली छि UCC हबार. Okay, so both are BJP ruled states to shape its own approach. एटा पर्सनल तंकर भी जाउ छि तंकर निजर बेनिफिट रे जिवो हला के नै हम से माने जते बेले कहितले कि आमे जिति की करिवो UCC कथा से माने कहितले कि आमे UCC आनिबा समस्त पे हम समान कोड आनिबा हला एंड सेति पे BJP ruled states गुडा का तमे जनरली एटा देखिया को पाउछ. ओके एमतिर तो सब बीजेपी रूल्ड हो गलानी सब स्टेट आ कोन. सो 2024 रे उत्तराखंड तमरो became the first Indian state. So why not Goa? To enact a UCC law, a historic precedent for all subsequent state level efforts. Gujarat also studying and working towards UCC, serving as a reference model for Madhya Pradesh. Okay. Madhya Pradesh preparing to introduce the UCC bill in July monsoon session. All the 3 states are ruled by the BJP, which has long championed UCC as part of its political agenda. At the national level, UCC remains a matter of significant debate. UCC pura country re hobo ki nahi, that's a significant debate, right? And is yet to be enacted by the parliament. So eta bahut durar katha ebe states gura kahi lagauchanti seta ame padhuchu. So the announcement has drawn criticism from opposition party. Congress MLA कहले बीटा major concern रहउची कोन प्रथम हला tribal exclusion. As I said in the beginning, tribal मान को हमें include करू ना UCC रे जोटा उत्तराखंड रे तमरा हला. If tribal communities are excluded from the UCC scope, can the law truly be called uniform? Uniform किंतु कहबा हमें tribal मान को हमें exclude कर दोछु हला. So this is a critical question about the legislation's integrity. Second hala tamaro gote concern live-in relationships. Concerns about how the proposed law will address the live-in relationship. Hala a sensitive social and legal issue. माने allow करिया कथा कि न करिया कथा. ताप में भी गोटे यूनिफॉर्म कोड हबो एंड से यूनिफॉर्म कोड रे समस्त पैसे सब सिटीजन्स मान को पैसे लागू हबा कथा हला. So these objections reflect a broader national debate. A UCC that carves out exceptions for certain communities may undermine its own stated purpose of uniformity. So ये जो ना टाइप पड़ुची uniform civil code, but एटा uniform केते sense जाए uniform में एटा कोई परिबा. That is a question. तो एमती जो मैं इस क्वेश्चन पढ़ला UCC विषय रे तमे पूरा लिखिबो को states follow करछंती को state चली एबे प्रोविजन हबार है कौन तार कनसेंस रोची पॉजिटिव्स कौन नेगेटिव्स कौन सब लिखा को पड़ो है. तो जनरली देख एबे जंत हमें ट्राइबल मानकर लैंड ऊपर जनरल लोकन को हक नहीं है. तो सेमिति बहुत सारी जिनस आम इंटरफेयर करि परिबा नहीं ट्राइबल मैटर्स रे. तो सेति पे ट्राइबल्स मान को हम यूसीसी रे बाहर कर दोछ. बट जदि सेटा करछु देन यूसीसी केमति होछ सेरा यूनिफॉर्म केमति होछ दैट इज द ओनली क्वेश्चन. सब बोले जिनस डिबेट चली छी. ओके
सो आर्टिकल 44 डीपीएसपी ताको केमिति गोटे एनफोर्सेबल डीपीएसपी इज एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट हां कि नहीं तीनटा जिनस फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी कोटा ये तीनटा भितर which all are enforceable by law and which are not enforceable जदि तमे पालिलो नहीं जदि मु गोटे मोर फंडामेंटल ड्यूटी कलिनी मते कोन जेल हिजो नहीं बट जदि मु फंडामेंटल राइट किछि मु ये कली तापे हे परियो सेमिति डीपीएसपी सेमिति न कले कोन हिजो जेल हिजो कि स्टेट्स मान को जेल हिजो कि जदि से माने न पालिले सेमिति किछि नहीं तो ए जदि आमे सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आनेबा देन ताको आमे केमिति आर्टिकल 44 टाको गोटे एनफोर्सेबल लॉ को कन्वर्ट करूछु एट द स्टेट लेवल बिफोर द पार्लियामेंट एक्ट्स बिकॉज़ आमे एटा स्टेट लेवल कथा ही कहूछु हला अच्छा पॉलिटिकल जिंस छोड़ा लीगल could set precedents on tribal rights minority personal laws जेमति कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉस हे गला मुस्लिम पर्सनल लॉ है लेगो सब माइनॉरिटी पर्सनल लॉस हला एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑफ द स्टेट लेवल यूसीसी फोर्सेस ए नेशनल कन्वर्सेशन अबाउट यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी हला एंड इक्वालिटी वर्सेस आइडेंटिटी तो एटा बहुत ही माने सेति में कहू जे डिबेटेबल टॉपिक यूसीसी बहुत डिटेल तुमको पढ़िया को पड़बो जाने को पड़बो जब भी तमे गोटे ब्रेनस्टॉर्म करबो सब आरो जिंसटा को भाबी कि आपको मैंने बुझीवा को पड़ेगा को कौन एक्चुअली हे परिबो सो आर्टिकल 42 44 वन लॉ फॉर ऑल मैंने केमते मान रखिबो बहुत छाड़ो आर्टिकल 44 इन डीपीएसपी वंस वन लॉ फॉर ऑल नंबर 44 कैन रिमाइंड यू ऑफ टू इक्वल हाफ्स हला इक्वल कर दबो 44 इक्वल अछि तो केमते मान रखिबो आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड तो दीटा जेतु यूनिफॉर्म अछि 4 अछि तो इट इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड हला एंड ए मिडास त मन रखिबो मिडास कोन ए सब वर्ड गोडा मन रखिबो कहली ना मिडास शॉर्ट फॉर्म रे मन रख दबो मैरिज इनहेरिटेंस डाइवोर्स एडॉप्शन सक्सेशन ए टॉपिक ऊपर ही हमर यूसीसी टा फोकस अछि ओके 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 एति थाओ आज पे नुआ नुआ क्लास आछ फिर अब नेक्स्ट क्लास को आसीबनी न तम दुर्गा साई आई हैव नो आइडिया सेंट्रल एसटी सर्टिफिकेट कोठी करा जाय ओके किछ डाउट अछि कार माने किछ मुंडर पसिले नुआ जो माने तमर ओरिएंटेशन हेनी आई एम सो सॉरी मते मते तमर क्लास करिया पड़िबो ना हला पर दिन आउट सेक्शन हबो जोथरे आई विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स केमिति तमे प्रिपेयर तमे मोटू प्रिपेयर हो तमे जोटू भी प्रिपेयर हो डिटेल रे हमें देखिबा करंट अफेयर्स कोटू पढिबा को न्यूज़पेपर भलो किबा को साइट हमें फॉलो करबा दरकार एंड को वे रे तमे करले नेक्स्ट ईयर बळो को तमे एटलीस्ट कॉन्फिडेंट हे कि जाय परबो कि नै मोर करंट अफेयर्स क्वेश्चन मोर सरी जाई ताकू मु प्रॉपर्ली रिवीजन भी करि छी बिकॉज़ ए पीडीएफ भरोसे रे जति तमे रहइबो बारंबार कहै छी पीडीएफ टा पीडीएफ ही रहि जेबो हला केबे भी तमे ताकू नेक्स्ट टच करबनी तो पीडीएफ रो नोट्स बनेबो गोटे करंट अफेयर्स रो नोट निहाती जब भी क्लास आसीबो किंबा यूट्यूब रे देखो कि जोठु भी तमे पढो टॉपिक तो शेयर रहबा ना तो करंट अफेयर्स गोटे नोट निहाती रहबा दरकार सो दैट नेक्स्ट ईयर जते बळे तमे जून रे एग्जाम दबो ता पूर्वरु तमे से नोट टा उल्टेले देखि परिबो कोन कोन आमे वर्ष जाके पढी छु नले पीडीएफ गुडा को तमे काडी के देखि परिबोनी वर्ष परे हैला सेति पे नोट टा बनेबो एंड नेक्स्ट माने पर दिन जो क्लास टा अछि विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन you can get the pdf in telegram तो कोई परिबनी चलनी आज चलियो पूरा ऐप रे देखि दियो ऐप रे मिलेबो अदरवाइज टेलीग्राम कौन से नीट हैला कि नहीं जे से वर्ल्ड वार वाला लागु नीट परीक्षा